Our recording. Good morning, beta. Good Hi, morning. good morning. Good morning, Savindra auntie. Good Thank morning. you, thank you, beta. Good Thank morning. you, Good morning. thank you Good so morning. much. Thank you, Good thank morning. you, Yeah, beta. there Thank you, was some thank glitch, you. then I had to log out and then log in. It's just that, but Happy everything is birthday fixed now. to me. Huh? Happy birthday to me. Oh, today is a birthday. Ma'am, please make me Yeah, the Tanisha. co-host. Happy Yeah. birthday, beta. Oh, Happy wish you a birthday. very happy birthday, Priya. May Thank, you grow Happy- and shine in your life so much. thank you so much. Happy birthday from my side also. Thank you. Happy birthday. Happy birthday. Thank you so much. Happy birthday, Priya. Thank you. Happy birthday, Priya. Happy birthday, Priya. हाँ, जो Ma'am, लाइव please, सारे ma'am, लाइव please make देखने me the चाहिए और स्माइल co-host. करते हुए. Ma'am, please make me the co-host. I did. Yeah, Thank you, I ma'am. did. Thank you, Vijay sir. Thank you. So have a great life, Priya. इसीलिए तुमको रात से नींद नहीं आ रही है. अरे मेरे को कल से ना वो बच्चों ने परेशान किया हुआ है. बच्चे कल से सेलिब्रेट करें. मेरी 2 चोटियां बना रखी है. उन्होंने कार्टून बना रखा है मुझे. How nice. और नोटिस बोर्ड सारा डिलीट करके उसमें पता नहीं क्या क्या उन्होंने लिख दिया जो मेरे को चाहिए वो सब. How nice. Happy birthday, It's really Priya. good. थैंक यू सुनैना दी. Good Yeah, morning. so today we are on to day 17, the magic check, and it's about money. Again, in the pursuit of chasing our dreams, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमारे पास पैसा नहीं होता है किसी चीज के लिए जो हमको चाहिए, तो obviously मन में हमेशा एक that वो होता है कंसर्न वरी दैट पैसा कहाँ से आएगा, बिकॉज लाइक पैसा आउटवर्ड होता है ना, किसी और को देना पड़ता है. तो उसके लिए मैजिक चेक प्रैक्टिस है, और ये मैजिक चेक प्रैक्टिस बहुत बाद में अगर अगेन आती है, मतलब ये शुरू में नहीं आती है फर्स्ट 10 या 12 चैप्टर्स में, बिकॉज इस लेवल तक पहुंच के विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रेंथन होना चाहिए. और ये चेक एक नॉर्मल चेक है, जैसे हमारी चेक बुक होती है. ये पैसा मैनिफेस्ट करने के लिए है, किसी चीज के लिए. I just my screen only disappeared. 1 second. जूम देवता मुझ पे बहुत मेहरबान हो रहे हैं. आई डोंट हैव दैट. आज बारिश भी हो रही है सवेरे से. Oh, 1 second, I'll just have to. Yeah, can you see the screen? Yes. Okay, ठीक है. So this is magic check, like it's a normal check. जो पैसा हम किसी चीज के लिए मैनिफेस्ट करेंगे. ये जो इमेज है इसमें एक पुराने जमाने का फोन है जिसमें हम नंबर डायल करते थे. इसका मतलब है कि आज उस चेक पे हम एक नंबर लिखेंगे. ऑब्वियसली कितने अमाउंट का चेक है तो लिखना ही पड़ेगा, बट दिस पुराने जमाने का टेलीफोन represents an exact number of amount of the money that we want. फिर ये सारे बहुत सारी files and folders नजर आ रही हैं, which means that we have to calculate that total how much money we need for that particular thing. Suppose you want to go for a vacation, so you have to see, okay, flights are so much, food will be so much, accommodation is so much, sightseeing charges, transportation, etc., etc. So that means you have to calculate everything. And then there's an envelope and there's a paper which represents the check, and there's a stamp here that says that thank you bolna matlab stamp karna. So thank you bolke we'll stamp that check that we will be making for some particular thing, and that is what it signifies. So ये बहुत beautiful सा chapter है, हम इसको पढ़ते हैं. Chapter number 17. So we have Dishant reading for us. Hello. Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Yeah, please start reading. Day 17, the magic check. In the magical universe, there are no coincidences and there are no accidents. Nothing happens unless someone wills
it to happen. I unquote. William Burgo, writer and poet. When you direct gratitude's magical power towards any negative condition, a new condition is created, eliminating the old condition. That means when you get yourself to the place where you feel grateful for money more than you feel a lack of money, a new condition is created, eliminating the lack of money and magically replacing it with more money. All bad feelings about money push money away from you and reduce the amount of money in your life. And every time you feel bad about money, you reduce it a little more. If you have feelings about money like envy, disappointment, worry, or fear, you cannot receive more. The law of attraction says that like attracts like. So if you feel disappointed that you don't have enough money, you will receive more disappointing circumstances of not having enough money. If you are worried about money, you will receive more worrying situations about money. If you feel fearful about the state of your money, then you must receive more situations that will continue to make you fearful about money. However difficult it may be, you have to ignore your current situation and any lack of money you may currently be experiencing. And gratitude is the guaranteed way for you to do that. You can't be grateful for money and disappointed about money at the same time. You can't be thinking grateful thoughts about money and have worried thoughts about money at the same time. Nor can you be grateful for money and have fearful thoughts about money at the same time. When you are grateful for money, not only do you stop the negative thoughts and feelings that push money away from you, you're doing the very thing that brings money towards you. You have already practiced gratitude for the money you have received and continue to receive. So, before you use gratitude's magical power for the money you want, you need to understand the various ways and avenues that money or riches could come into your life. Because if you're not grateful each time your riches or money increase, you will stop the abundance from flowing to you. Money can come to you through receiving an unexpected check, an increase in salary, a lottery win, a tax refund, or an unanticipated gift of money from someone. Your money can also increase when somebody else spontaneously picks up the tab for coffee, lunch, or dinner. When you are about to purchase an item and you discover it has been discounted, when there is a money back offer on a purchase, or when someone gives you a gift of something you needed to buy, the end result of every one of these circumstances is that you have more money. So whenever a situation arises, ask yourself, does this circumstance mean that I have more money?
Because if it does, you need to be very grateful for the money you are receiving through that circumstance. If you tell a friend you are about to buy an item and the friend offers to lend or give you the very item because they don't use it, or if you're planning to travel and you hear about a discounted special that you end up taking, or if your lending institution lowers their interest rate, or a service provider offers you a far better package, your money magically increase through the saving of money. Are you getting the idea of the unlimited situations where you can receive money? Most likely, you have experienced some of these situations in the past. And whether you realized it or not at that time, they occurred because you attracted them. But when gratitude is your way of life, you attract magical situations all the time. Many people call it good luck, but it's not luck at all. It's the universal law. Any circumstance that results in you having more money or receiving something that cost money is a result of your gratitude. You will feel great joy in knowing that you did it. And when you combine your joy with your gratitude, you have a real magnetic force that will keep attracting more and more abundance. When I arrived in the United States several years ago, I arrived with 2 suitcases. I worked in a bare bones apartment with my computer on my lap. I didn't have a car, and so I mostly walked everywhere. But I was grateful for everything. I was grateful to be in the United States. I was grateful for the work I was doing. I was grateful for the bare bones apartment with its 4 plates, 4 knives, 4 forks, and 4 spoons. I was grateful that I could walk to most places. And I was grateful that there was a taxi stand right across the street. Then something incredible happened. A person I knew decided to gift me, a person I knew decided to gift to me a driver and a car for a few months. Other than my computer, I was living with the most basic material things to survive. And then suddenly, I had my own personal driver and car. I was grateful, so I was given more. And that is exactly how the magic happens with gratitude. Today's magical practice for the money you want to receive has brought astounding results to many people. At the end of this practice, you will find a blank magic check from the gratitude bank of universe, and you are going to write out the magic check to yourself. Fill in the amount of money you want to receive along with your name and today's date. Choose a specific amount of money for one thing you really want, because Yeah, sorry.
choose a specific amount. Can you see that on the screen? Yes, ma'am. So fill in the amount of money you want to receive along with your name and today's date. Choose a specific amount of money for one thing you really want, because you will be able to feel more gratitude for the money when you know what you are going to spend the money on. Money is a means to what you want, but it's not the end result. So if you just thought about money per se, you wouldn't be able to feel as much gratitude. When you imagine getting the things you really want or doing the things you really want to do, you will feel far more gratitude than if you were just being grateful for money. You can photocopy or scan the magic check from the book. You can also get an abundance of blank magic checks from the secret.tv/magic check. If you want, you can start with a smaller amount on your first magic check. And after you receive the smaller amount, you can keep increasing the amounts on your next checks. The benefit of starting with a smaller amount is that when you magically receive it, you will know that you did it. You will know absolutely the magic of gratitude worked, and the gratitude and joy you feel will make bigger amounts believable to you. Once you have filled the details of the magic check, hold the check in your hands and think about the specific thing you want the money for. Get a picture in your mind and visualize yourself actually using the money to get the very thing that you want, and put as much excitement and gratitude into it as you can. Maybe you want money for a new pair of shoes, a computer, or a new bed. So picture yourself actually buying what you want in a store. If you would purchase what you want online, then picture yourself receiving the delivery. So you feel excitement and gratitude. You might want the money to travel overseas or for your child's college education. So imagine buying your airplane ticket or opening a college bank account and feel as happy and grateful as if you have really received it. After you have completed these steps, take the magic check with you today, or put it in a place where you will see it often. On at least 2 more occasions during the day today, take the magic check in your hands. Picture yourself actually using the money for what you wanted, and feel as grateful and excited as you can, as though you are really doing it. If if you want, you can do it more times in the day. As with any other magical practice, you can't do it too often. At the end of the day, today, either keep your magic check where you had it, or put it in another prominent place where you will see it daily. You could put it in your bathroom mirror, your refrigerator, underneath your magic rock, in your car or wallet, or on the background of your computer. Anytime you see your magic check, feel as though you have received the money.
and be grateful that now you can have or do what you want. When you have received the money on your magic check, or if you receive the item you wanted to spend the money on in another magical way, replace the check with a new amount for something else that you really want, and continue with the magic check practice as long as you want. Magical practice number 17. The magic check. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, fill in your magic check with the amount of money you want to receive, along with your name and today's date. Number 3, hold your magic check in your hands and imagine purchasing the specific thing that you want the money for. Feel as happy and grateful as you can that you have received it. Number 4, take the magic check with you today, or put it in a place where you will see it often, on at least 2 more occasions. Take the check in your hands, picture yourself using the money for what you want, and feel as grateful as though you were really doing it. Number 5, at the end of today, keep your magic check in a prominent place where you will see it daily. When you have received the money on your check, or if you receive the item you wanted to spend the money on, replace the check with a new amount for something else you want, and repeat steps 2 to 4. Number 6, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Yeah, thank you so much, Dishant, for reading so nicely, slowly, aram se. Dimag mein ghus gaya sab kuch. Thank you so much. Extra long chapter, but it again and again, Rhonda Byrne is trying to explain to us that पैसे को लेके रिश्ता बहुत अच्छा रखो, पैसे को बहुत लव दो. Don't give the feelings of worry, anxiety, fear, frustration with money. Definitely not jealousy. One moment also, if you have thought in your mind that why is the other person having so much of money और उसकी success होती जा रही है, आपके पास पैसा नहीं आ रहा, ठीक है, और आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो हमारे पास जो पैसा है वो भी हमसे स्लिप आउट हो जाएगा. सो इसलिए पैसे को लेके जेलसी और रिजेंटमेंट और वरी वी शुड नॉट बी डूइंग एट ऑल. वैसे भी अगर हम भी किसी के घर जाएंगे और वो लगातार मतलब वो हमको नहीं ट्रीट कर रहे, हमें वाइब आ रही है कि वो जेलस है हमसे, या फिर वो कांस्टेंट दैट वरीड वाला एटमॉस्फेयर है, तो हम कहते हैं ना कि हमें नहीं उससे मिलने का मन करता. वैसे ही पैसा भी यही देखता है. पैसा उन्हीं के घर में आता है जहां पे वो बहुत वेलकम होता है. वरी, एंजाइटी, फियर, जेलसी के घर में पैसा नहीं आता है. So we need to be very careful about the thoughts that we give to money. I love money हमेशा बोलना चाहिए. हमने डॉक्टर जोसेफ मर्फी वाली बुक में बहुत सारे ब्यूटीफुल एफर्मेशंस देखे थे पैसे को लेके, that I love money, money loves me. Then things like thank you money for always circulating in my life. I spend it on good, and whatever it is that you want to say, whenever you're releasing the money, we have to say that money, you're going from my life, but come back quickly. और बहुत सारे अपने दोस्तों को भी मेरे साथ आप अपने साथ लेके आना. You know, so that is the language that money listens to. This is number 3 chapter that we are doing on money. Okay, and number 1 वाला था मैजिक मनी, जिसमें मतलब हमने एक वो स्लिप बनाई थी और नोट पे चिपकाया था
thank you for all the money I have received throughout my life. That means we had to go back to the past and thank all those moments जहाँ पे पैसे से things were purchased for us. हमारे लिए पैसे से कोई ना कोई चीज आई थी. हमारी स्कूल की फीस, हमारी यूनिवर्सिटी की फीस, हमारे कजिन्स ने अगर हमारे लिए कुछ वो लेके आए थे, कहीं बाहर रहते हैं, आए थे कुछ लेके, बर्थडेज पे जो प्रेजेंट आए थे, उन फ्रेंड्स के नाम याद करके हमको उनको थैंक यू बोलना था. सो वी हैड टू गो बैक, बचपन से लेके जब तक शादी नहीं हुई और जब तक हम अडल्ट नहीं हो गए, तब तक सारी चीजें जो पैसे से आई थी, फॉर दैट वी हैड टू बी ग्रेटफुल. दैट वाज नंबर 1 chapter. Then the second chapter was chapter 9, that was Money Magnet. Money Magnet chapter talked about that release money with a lot of joy. Okay, whenever you pay money to someone, never be like ये तो मेरा पैसा ही वेस्ट हो रहा है, ये तो इतनी महंगी थी. महंगा क्या होता है? महंगा तो कुछ होता ही नहीं है ना. अगर आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पड़े और आप 2000 रुपीज की चीज खरीद रहे हैं, तो क्या वो महंगी हुई? तब तो नहीं हुई ना. तो महंगा वर्ड तो बहुत रिलेटिव होता है, और अगर महंगा आपने किसी चीज के साथ अटैच कर दिया तो दैट्स नॉट अ गुड फ्रीक्वेंसी ऑफ मनी. ओके, सो नेवर से एनीथिंग लाइक वो महंगी है. आप क्रिएट करो ना पैसे उसको खरीदने के लिए. इट्स ऑल राइट, यू नो, इफ यू आर नॉट एबल टू बाय. जैसे अब्राहम हिक्स ने अपनी बुक्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन थी कि द वोटेक्स, उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि सपोज यू मतलब उन्होंने एस्टर हिक्स के बारे में ही बताया है कि एस्टर वेंट टू अब्राहम हिक्स इज अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, दे आर स्पिरिट्स. ओके, तो वो एस्टर हिक्स की बॉडी में जाके उनसे बुक्स लिखवाते हैं. सो तो वो एस्टर हिक्स के बहुत एग्जाम्पल देते हैं, एस्टर के, जिनके थ्रू चैनल करते हैं वो अपने आप को. दे आर ऑल डिपार्टेड सोल्स. They come in Esther Hicks' body, and then Esther writes the books. And the word they have given is Abraham Hicks. Abraham Hicks is not a human. Okay, they're collective consciousness. So मतलब डिपार्टेड सोल्स है वो सोल जो जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते थे. सो जब वो एस्टर हिक्स का उन्होंने एक बार बताया था कि दैट शी वेंट टू अ स्टोर और वहां पे बहुत अच्छा कटलरी सेट था. एस्टर हिक्स रियली लव्ड इट, बट वो उसके बजट के बहुत बियॉन्ड था एंड शी कुड नॉट बाय इट. सो अब्राहम हिक्स हैज मेंशन्ड दैट यू नो एस्टर gave a lot of love. मतलब उसको ना, मतलब एस्टर को वैसे भी कटलरीज और वो घर होम डेकोर वाली जो चीजें होती है उनका बहुत शौक है. कई लोगों को अपने खुद के कपड़े खरीदने का शौक होता है, कई लोगों को घर बहुत सजाने का शौक होता है, एंड दे वांट बेस्ट ऑफ द आर्टिफैक्ट्स टू बी देयर फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब. सो एस्टर्स टिपिकली लाइक दैट. कहीं पे भी वैसे भी उनकी बुक्स पढ़ के पता लग जाता है दैट एस्टर हिक्स इज वेरी फॉन्ड ऑफ होम डेकोर स्टफ. So she went and she loved that cutlery set and she really wanted to buy it, but it was beyond her budget. And then, you know, like Abraham Hicks ne usme bataya tha ki that how Esther Hicks, you know, gave so much of love to that thing came into her life very soon. I think someone gifted it or something like that. And she got that cutlery set into her house. Okay, same thing, Rhonda Byrne's skirt. We remember that, right? So she was in Australia. वो अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया Rhonda Byrne had been there. वहां पे उन्होंने किसी लड़की को पेरिस में एक ब्यूटीफुल स्कर्ट पहने हुए देखा था. ठीक है, एंड शी फेल इन लव विद दैट स्कर्ट एंड यू नो लाइक सो मच ऑफ दिस थिंग, नॉट दैट ओ आई डोंट हैव इट और आई रियली वांट इट. यस, शी गेव सो मच ऑफ लव दैट व्हेन शी केम बैक फ्रॉम पेरिस शी केम टू ऑस्ट्रेलिया. And in Australia, she was just passing through a street one day, driving down. She was driving herself in the street one day, and she saw that on the right side there was a mannequin who was wearing the same skirt exactly that she had seen in Paris. And then, you know, like she really fell in love with that, but it was the morning time, the store was closed, so she could not do anything about it. फिर उसके बाद जब वो स्टोर खुला तब Rhonda Byrne went to that store and that store in charge told her that पता नहीं कहाँ से ये स्कर्ट हमारे पास आई है, इट वॉज अ सिंगल पीस, इसीलिए हमने इसको सुपर सेल पे लगा दिया है, एंड इट हैड बिकम वेरी वेरी अफोर्डेबल एंड फाइनली Rhonda Byrne could ask it. तो वो अपनी स्टोरी बता रही हैं that was some other country and she came back to some other country and there she got that thing that she gave a lot of love. So definitely shoot your rocket of desire. In Abraham Hicks words, whenever we shoot a rocket of you know, that's the word they use, Abraham Hicks. Shoot a rocket of desire combined with love, and then that thing comes to us.
So not once did they say that it's too expensive, how will I afford it, पता नहीं मेरे पास इतना पैसा क्यों है नहीं है, that I'm not able to buy it. ये सब नहीं सोचना होता है. जो चीज आपको पसंद है, कोई घर पसंद आया, आप उसको इतना प्यार दो, उसके बारे में सोचो, उसको देखो और बहुत प्यार से देखो. You will see that, you know, how the universe brings it to you. You would never know, because how to pata nahi na, matlab the working of the universe, the you know, the universal forces that has created the planets and this earth and the plant life and animal kingdom, human beings, okay, controlling the air, controlling the distance between the sun and the moon, उनको हमको बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे वो हमारे पास चीजें लेके आए. ठीक है, वो बहुत magnanimous है, beyond the wildest of the imaginations that we could have. So we just have to shoot a rocket of desire, in Abraham Hicks' words, because they've been my first mentor, so I mention them a lot and I read them a lot. Okay, so shoot a rocket of desire and mix a lot of love into it and be grateful for that you could see and that thing could come to your life. कोई भी चीज अगर आपको आंखों के सामने दिख रही है, उसका एक पर्पस होता है. ठीक है, वो पर्पस आपका फुलफिल हो जाएगा, प्रोवाइडेड रेजिस्टेंट फीलिंग्स ना हो. पैसे को लेके यही है, डोंट हैव रेजिस्टेंट फीलिंग्स दैट आई एम नॉट एबल टू बाय इट. इट्स ओके, टुडे यू कांट बाय जिमी चू शूज, एब्सोल्युटली ओके, डजंट मैटर. जस्ट गिव अ लॉट ऑफ लव टू दैट ब्रांड and you know, kind of whatever, that I love those shoes. You can scroll on your Agiolux. Scroll on the Agiolux, you'll get like hundreds of Jimmy Choo shoes there. Give a lot of love, admire them, and then wish that someday you could have them and you would love to have them. That's it. Okay? No feeling कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं 60,000 के शूज कैसे खरीदूंगी, बहुत ज्यादा पैसा है, बजटिंग करनी पड़ेगी, है ना? ये सब नहीं सोचना चाहिए. So this is how we have to go forward in life. I mean, like I was scrolling. So as a result of doing all these practices yesterday, actually I went to Agio when I saw that the beautiful dress of Armani Exchange, and I was very obviously unke prices Armani's ke shuru hi hote hain 10,000 rupees se, and it was a similar dress I already have, but बार अभी भी दिमाग में था, तो मैंने सोचा था मैं रात को कर लूंगी, but I had a dinner party in the house and I could not you know, like I could not order it that time. I mean, like yesterday was Keniko, it was a holiday, but yeah, I mean, there were multiple things that were happening, and then I had to be for the office calls constantly. So I thought I'll do it in the evening. I couldn't do it in the evening. Then I thought that I'm going to do it like, you know, abhi main subah kar lungi. But then agar Deepti part 1 hoti, jab magic book nahi aayi thi, I would never have thought of getting that dress. I mean, you know, but then I thought that, okay, no, this is meant for me. It has come multiple times in front of my eyes. That means the universe is telling me to buy it, and I should not think that it is overpriced, you know. So that thing has to come from within us after a time, that I know that wo jo bhi hai 9,000 or 999, jo what I'll be paying for that dress, I know that that money is going to get multiplied and come to my life. And when I pay that money, the moment I'm putting the click button there, you know, of paying that money, it would have so much blessings that, you know, to that company, to the Agio app or whatever, that I know that it will multiply and bring lots of its friends and come back to my life. राइट. सो ये रिश्ता पैसे के साथ होना बहुत जरूरी होता है. मेंटल कंडीशनिंग हमारी कंजूसी की शुरू से होती है, या कहाँ से हम पैसे बचा लें, या वो वाली चीज. दिस इज अ मेंटल प्रोग्रामिंग दैट वीव ऑलवेज हैड. Okay, now reprogram your mind to thinking that, you know, I can afford anything and everything, and money comes to me easily and frequently from multiple sources of income, and it's freely circulating in my life, and I spend money with joy, and it comes back to me multiplied several times. So when you have this new thought pattern, जो इसमें first paragraph में लिखा हुआ है, that पैसा बहुत आराम से आपके पास आता है, लेकिन पुरानी प्रोग्रामिंग जो होती है उसकी वजह से there are blockages that we have in our mental attitude towards receiving money or spending money. Okay, so because of that, what happens, it says that the moment you put a new programming in your mind, the old programming will disappear. ठीक है, it's not exactly इस तरीके से लिखा हुआ है, इसमें condition का नाम लिखा हुआ है, that whenever you put a new condition, the old condition automatically goes away. तो ये इसका मतलब है, हमारे माइंड में हम ये जो न्यू कंडीशन डालेंगे, that I can afford anything and everything, and I know money, I love money so much that I know it cannot live without me,
and I know that it will go and it will immediately come back to my life multiplied several times, and it's freely circulating in my life, and I pay money with joy, I give money with joy. We have to learn to give money with joy, only then it's going to come back. So that's very very important. और वो किस रास्ते से आता है पता नहीं, इसीलिए जब कोई भी बोलता है मुझे बिजनेस का टर्नओवर इतना चाहिए, मेरी इतनी सेल हो जाए, मेरा उतना वो हो जाए, I want a good job, I always say that forget about all those things, just ask for money. Why do you want a good job? Obviously, I mean, like, there's definitely power, position, whatever, but money. Okay, why do you want 100 crore business turnover? Money. So always say that, you know, instead of really thinking about those things, ask for money. मनी हमारी जिंदगी में आने का रास्ता ढूंढ के आ जाता है, ठीक है, जिस भी रास्ते से आना होता है. कभी कभी क्या होता है that job is not destined for us, a great business is destined. Sometimes it is that we think that we will start doing a business क्योंकि हम हमारे comfort zone में business आता है, तो हम business के beyond नहीं देख पाते. But maybe there is some kind of a job which is waiting for us, maybe the position of a vice president or a CEO or whatever. हमने experiences पढ़े थे दूसरी जोसेफ मर्फी की किताब में, है ना, तो वो जॉब डेस्टिन्ड होती है which will take you places and after which you will have a business. You know, as we say, the subconscious knows our destiny. Accordingly, when we surrender to the power of the subconscious mind or to the higher self, the higher intelligence, God, whatever we might call, रास्ते वो खुद बनाता है. जब सरेंडर कर देते हैं ना, आप बस ये पूछो, शूट योर रॉकेट ऑफ डिजायर एंड आस्क फॉर व्हाटएवर यू वांट टू आस्क. सपोज यू वांट टू स्टार्ट रिसीविंग 10 लाख रुपीस एवरी मंथ विद ईज एंड जॉय. Okay, now surrender. Now universe, the forces, the God, the higher intelligence, whatever, is going to make that pathway that will start making you receive 10 lakh rupees every month with ease and joy and on autopilot. It's not that you're struggling. Okay, on autopilot you're going to get it. That is the power of surrender. Okay, so today's chapter is about अपनी feeling frequency change करना है हमको पैसे को लेके. जब whenever we are paying money, जब हम पैसे दे रहे हैं तो हमको बहुत ज्यादा joyful होके खूब सारी blessing भर के पैसे में देनी है. Again, it's not about the amount of money that you're giving to someone, it is about the gratitude that you're putting in that money that's going to make a difference to your life. Okay, this we have to remember. So now we come to आज की practice. आज की practice is magic check, जिसमें आप normal check ले सकते हो. वैसे तो इसमें check है, कोई group पे डाल देगा जो www.thesecret.tv की website से लिया हुआ है. But what I do is I make that normal check. मैं अपने HSBC account का जो normal मेरी checkbook है उसी का check लेती हूँ. टू ऑफ कोर्स जहां पे फर्स्ट लाइन होती है टू यूनिवर्स टू अपना नाम, मतलब सबसे ऊपर डेट लिखो. डेट लिखनी मैंडेटरी होती है, ठीक है. डेट लिख लिया. अप टू दीप्ति, व्हाटएवर योर नेम है, सपोज योर नेम इज आरती कश्यप, यू राइट दैट आरती कश्यप. उसके बाद अमाउंट की जगह यू हैव टू राइट आपको जो भी चीज खरीदनी है. सपोज यू वांट टू गो फॉर अ फैमिली वेकेशन एंड इट्स कॉस्टिंग यू 2.5 लाख रुपीज. Okay, आपका family vacation is costing you 2.5 lakh rupees. So you have to write 2.5 in words and in numerics. Write that. और नीचे जहां पे आपको अपने साइन करने होते हैं वहां पे the universe you have to write. That's what I do. I don't use these checks anymore because मैं ये practices 4 साल से कर रही हूँ, तो हर महीने ये वाली practice आती है. And then that is it, surrender. Okay, that check of course it will be with you forever. आप अपने वॉलेट में डाल सकते हो, आप अपने घर पे टैग बोर्ड पे डाल सकते हो. You can put it on your refrigerator. So whichever way you want to do it. So ये चेक बनाना है. चेक has to be for a specific thing. It doesn't have to be random. जैसे ग्रीड में पैसे तो लालच वाला नहीं है. ये स्पेसिफिक चीज होनी चाहिए, समथिंग दैट यू रियली वांट बट आपको लग रहा था यू लव बट यू कुड नॉट बाय इट बिकॉज आपके पास उतना पैसा नहीं था, या आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो. सपोज आपको 14x प्रो चाहिए, है ना, फोन चाहिए. वो फोन जितने का भी आ रहा है, सपोज 1.28 lakhs करेंटली. सो फर्स्ट मालूम कर लो एग्जैक्टली कितने का है, ठीक है. तो 1.28 lakhs आप उसमें चेक में डाल दो फॉर दैट फोन. इट हैज टू बी, ये नहीं कि वो पैसा आ जाए तो फोन खरीदो ही ना और ग्रीड आ जाए कि नहीं चलो एक और कर लेते हैं. जिस चीज के लिए बोला है वो चीज करो. देयर इज नो चीटिंग बिटवीन अस एंड द higher intelligence within. Okay, there's no cheating between us. अगर आपने 1.28 फोन के लिए लिया है तो उसको फोन के लिए ही यूज करो.
क्योंकि पैसा ही इसीलिए आया है। इसी तरीके से कोई और चीज आपको किसी को देना है पैसा, सपोज आप जो भी चीज आपको खरीदनी है, समथिंग फॉर विच इट कुड बी अ वेकेशन, इट कुड बी द रेनोवेशन ऑफ योर हाउस, it could be a piece of furniture that you wanted to buy which was pretty unaffordable to you at that point of time. It could be anything for that matter. Some great shoes you want to buy something for yourself, in terms of whatever, some clothing, whatever, some sari, कोई डिजाइनर वेयर आपको करना है, आपको रोहित बाल क्रिएशंस खरीदने हैं, आपको ऋतु कुमार क्रिएशन खरीदना है, तो आप उसके लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपको किसी को देना है, किसी से आपने बोरो किए थे 2 लाख रुपीस, यू वांट टू गिव दैट 2 लाख रुपीस बैक टू दैट पर्सन, आप उसके लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो। और वो चेक लिखा आपने, उसके बाद दिन में 2 बार और यू हैव टू पिक अप दैट चेक, होल्ड इट विद योर फिंगर टिप्स, विद बोथ योर फिंगर्स, बोथ दोनों हाथों की उंगलियों से आप उसको पकड़ो और विजुअलाइज करना है दैट यू हैव रिसीव्ड द मनी एंड हाउ हैप्पी यू आर। ओके, लाइक सपोज इफ यू हैव टू गिव द मनी टू समवन, तो आपको विजुअलाइज करना है, उस पर्सन की आवाज तो जानते ही होगे जिसने आपको बोरो किया था पैसा, तो वो बोल रहा है, आप उसको बोल रहे हो सॉरी मुझे आपको रिटर्न करने में देर हो गई, बट आई वाज जस्ट अरेंजिंग फॉर सम मनी एंड देयर वर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स आई हैड टू डू, सो अब से ऐसा नहीं होगा। एंड दैट पर्सन सेज अरे नहीं कोई बात नहीं यार, चलता है ऐसे, एंड ऑल ऑफ दैट। That is what you have to visualize. If you wanted to buy a nice sari, which was any designer creation, so imagine that you're wearing a sari and you're flocked with compliments. People are really appreciating you and feeling so good about yourself. 1 minute minimum visualize करना है कि वो चीज आ गई है। और अगर आपको कुछ iPad या कुछ ऐसी चीज चाहिए, ऑनलाइन आपने ऑर्डर करी है, तो ऑनलाइन डिलीवरी को रिसीव करते हुए इमेजिन करना है। And then how you're opening that packet and you're so happy that you received it, because for the longest time you wanted that thing in your life. So this is how you have to so this is about the magic check. So Rhonda ने अपना example बताया है कि जो पैसा आपके पास है, even if it is much lesser than what you would have wanted, इतना ग्रैटिट्यूड उसमें भर दो, बिकॉज ग्रैटिट्यूड एक तरीका होता है जिससे सब कुछ एम्पलीफाई हो जाता है आपकी लाइफ में। तो किसी भी चीज के लिए आप जब ग्रैटिट्यूड करते हो, वो एम्पलीफाई उसी वक्त मल्टीप्लीकेशन उसका शुरू हो जाता है यूनिवर्स में, ठीक है। सो इस ब्रह्मांड में जो एनर्जी आप देते हो वो बहुत एम्पलीफाई और मल्टीप्लाई होकर आपकी जिंदगी में वापस आती है। तो इसीलिए अगर आपके पास कम पैसा है, सपोज आप अभी 1 लाख रुपीज रिसीव करते हो हर महीने और आपका एम है 10 लाख का, उस 1 लाख को आप इतना प्यार दो, सेलिब्रेट करो, that you have so much in your life, and you see that that money will start multiplying and it will start increasing. This is how beautiful life is. कोई भी चीज चाहिए तो उसको बस शुक्राना दे दो, इतना सारा उसमें भर दो कि वो एम्पलीफाई होने लग जाए, ठीक है। ये प्रैक्टिस है। और रिलीज मनी विद अ लॉट ऑफ जॉय, ये मैं बार बार बोलती हूँ, बिकॉज पैसे देते वक्त दिल कभी कभी छोटा हो जाता है, स्पेशली जब ज्यादा पैसे देने होते हैं या फिर ऐसे पर्सन के लिए पैसे खर्च होते हैं जिसको आप पसंद नहीं करते, ठीक है। इट कुड बी योर डोमेस्टिक हेल्पर्स इन द हाउस, because they do a lot of छुट्टी, they do an untidy work, they are rude, खाना अच्छा नहीं बनाते, मतलब कुछ भी हो सकता है रीजन, है ना। सो इसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ, योर ग्रैटिट्यूड शुड नॉट डिपेंड अपॉन अदर पर्सन्स बिहेवियर or other persons whatever they are doing. It's your gratitude. Don't burn your life. Okay, you still have to, आप देखना आपके helpers का behavior, रवैया, quality of the खाना, quality of the काम that they do, that will change when you're very grateful for them. मतलब अपने आप ये changes आते हैं। हमारे यहाँ पे जो helpers जो पता नहीं कितने मेरी भारती जो है who's my housekeeper, वो पता नहीं कितने साल हो गए। my son's in college now, वो जब ग्रेड 3 ग्रेड 4 में था, छोटा बच्चा, वो तब से हमारे यहाँ काम कर रही हैं। एंड I have no doubt in saying that she is way more efficient than me. like इतनी ध्यान से खाना बनाना, प्लेटिंग करना, मतलब ऐसा नहीं है कि खाना बना के रख दिया, प्लेटिंग भी बहुत अच्छे से करती है उसको। मतलब she is giving you rajma and rice, she will ensure that there's very nicely done, decorated. The rajma will have finely chopped coriander and ginger juliennes sprinkled on top of that rajma bowl. And then there's rice, steaming hot rice. There will be some desi ghee kept because we use a lot of desi ghee in the house, upar se dalne mein, dal mein, chawal mein. So there's always there, and there will always be some beautifully cut salad which is garnished and made colorful.
So even if she has to grate some, like yellow, wo orange wale carrot, and just to change that color of the salad, she'd do it. This is how domestic helpers also become, when we are constantly grateful and we give them money with every time I give her salary, like sometimes I credit it to her account, sometimes I give her in cash. So whenever I give, मैं पहले रूम में जाके ना हाथ में पैसे लेके खूब सारा लव देती हूँ उस पैसे को। और एक एक चीज जो स्पेशल है भारती के बारे में, कि एक्सट्रीमली टेस्टी खाना बनाती है, मेरे कपड़ों का ध्यान रखती है, मेरे क्लोजेट्स लाइक ऑर्गेनाइज्ड रखती है, शी टेक्स केयर ऑफ एवरी लिटिल थिंग इन द हाउस, इवन जो बिल्स आते हैं, शी नोज की न्यूज़पेपर का बिल और उसका बिल एंड धोबी का बिल एंड इस तरह से एवरीथिंग, आई मीन इतने अच्छे से सफाई करती है। कभी मैंने कहीं कुछ रखा होता है, उसके नीचे हल्की सी भी डस्ट होती है, शील कम रनिंग एंड हमेशा मेरे नाक के आगे खाना गरम गरम लेके घूमती है, खाना खाओ खाना खाओ खाना खाओ। वन पर्सन कॉन्स्टेंटली टेल्स मी आप बहुत पतले हो रहे हो, like you need to start eating more and all of that. So for every little thing, when I pay her salary, I go to my bedroom, मैं पैसे निकालती हूँ, उसको हाथ में, दोनों हाथ के बीच में ऐसे रख के, that thank you universe for giving me, this house runs on autopilot, and so all the efforts that she does, itna paisa, and then I always tell that money you're going to her house right now, like in her account, multiply and make all her dreams and desires come true and give her the best of health that she can have. इतना 1 minute मैं उस पैसे को charge करती हूँ, and then I give to my to Bharti, and of course I have a couple of more others who come. So this is what I do. It's like 1 minute I charge the money before paying when I have time. Of course if I'm on the road and I'm buying 2 kgs of apples, then of course वो मन में फटाफट करना पड़ता है, but when I'm taking out the money, मतलब किसी को देने के पहले, then बहुत सारा charge करके, तो उससे देखना that आपका घर will become like a heaven, because it does matter सबकी energy and सब कितना ज़्यादा करते हैं. So this is the kind of relationship we need to have with the money. And of course the magic check practice, morning count your blessings continues, writing 10 blessings, rereading them, and उसके बाद 3 बार thank you बोलना, और रात को magic rock practice. So I hope this practice is clear to all of us. It has to be directed. Check filling has to be for a particular thing, not for 2 things. Okay. Greed is below the line feeling. Anyone, when we have greed, और मिल जाए, buy one get one मिल जाए, free की कोई चीज मिल जाए, those people have a lack mentality. You will never get more. Lack consciousness में आपको कभी भी abundance consciousness नहीं होती है. Don't look for discounts. Make yourself capable. अपने आप को उठाओ, ठीक है? उस चीज को नीचे आने के लिए मत वेट करो, अपने आप को उठाओ. So of course आपको discounts मिलेंगे, आपको buy one get one free मिलेगा, आपको free tabs मिलेंगे, कोई आपको ऐसा गिफ्ट दे देगा जो आप खरीदने की सोच रहे हो, ठीक है? All those things you will get. And but you have not asked for them. Okay, that was a gift to you from universe. If you're asking for them, then you are like, then it's a lack consciousness. हमेशा पैसे के साथ आपका रिश्ता खट्टा खट्टा सा रहेगा, मीठा मीठा नहीं रहेगा, ठीक है? सो मीठा वाला रिश्ता कर लो. ये सब चीजें एज अ बोनस आती हैं जिंदगी में, जब बाय वन गेट वन हो जाता है, या कोई गिफ्ट ऐसी आ जाए जो आपको रियली यू वांटेड इट. ओके, सो दिस इज हाउ इट इज. And now we go to the other book. Who's reading for us today? Good morning, ma'am. I'm reading. Okay. मेरे इतने सारे टैब्स खुले हुए हैं क्योंकि मुझे बहुत पढ़ाई करनी पड़ रही है आजकल. 1 second. Lost that. Yeah. So this is we are doing about we become worthy of allowing. तो कल हमने affirmations पढ़े थे कि अपने आप को बार बार ये बोलो that the world always gives me good and I receive only good, the best, like all those, ये सारे. और फिर एक मेडिटेशन है जो सेल्फ अप्रिसिएशन मेडिटेशन है, जो आप सब करोगे, मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे स्क्रॉल करना होगा, नहीं तो उस दिन की तरह कॉमेडी हो जाएगी. सो या प्लीज स्टार्ट रीडिंग.
Here is a meditation you can do to improve your self-esteem and increase your capacity to handle the love and energy that the universe is ready and eager to send in your direction. हाँ Self जी, तो रीना आपको अब हमें मेडिटेशन कराना होगा। जितने भी लोग सुन रहे हैं एक्सेप्ट फॉर मी, आंखें बंद करके पीठ सीधी करके बैठ जाइए। रीना धीरे धीरे पढ़ना होगा, मेडिटेशन है ये। Yes, okay, ma'am. सेल्फ एप्रिसिएशन मेडिटेशन। सभी लोग आप अपनी पीठ सीधी कर लें और आराम से बैठ जाएं। 3 गहरी लंबी सांस लें और आंखें बंद कर लें। अपना माइंड और अपना हार्ट कीप calm and quiet. So imagine yourself in some everyday situation and picture someone, maybe someone you know or a stranger, looking at you with great love and admiration and telling you something they really like about you. Now, picture a few more people coming up and agreeing that you are a very wonderful person. If this embarrasses you, stick with it. Imagine more and more people arriving and gazing at you with tremendous love and respect in their eyes. Picture yourself in a parade or on a stage with throngs of cheering, applauding people, all loving and appreciating you. Hear their applause ringing in your ears. Stand up and take a bow and thank them for their support and appreciation. This was एक छोटा सा meditation that we have. Now you can come back and open your eyes. So this is, तो हमको इस बुक ने सिखाया है कि हमेशा मेडिटेशन करने के पहले या विजुअलाइजेशन करने के पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करो। चैप्टर नंबर 2 में बताया था कि पूरी बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम योर टोज आपके फीट, आपके जो पैर के नीचे का होता है, टू आपके लेग्स, आपके पेल्विस, आपका लाइक पूरा मिडल एब्डोमेन, आपका चेस्ट, आपका लेफ्ट हैंड, आपके राइट हैंड, ऐसे बॉडी पार्ट्स को विजुलाइज कर करके आपको रिलैक्स करना है। और फिर डीप मतलब ब्रीदिंग करनी है जैसे अभी रीना ने बताया, और फिर आपको विजुअलाइजेशन करना होता है। तो पहले अपने आप को मेडिटेटिव स्टेट में लाना होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है ना, तो उस क्लटर को साइलेंस करने के लिए, क्योंकि साइलेंस में ही इनर वॉइस आप अपनी सुन पाओगे। बहुत जल्दी इफेक्ट होता है उसका जब आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करके फिर विजुअलाइजेशन करते हो। तो जैसे अभी रीना ने बताया ना, पहले रिलैक्स कराया कि 3 गहरी लंबी सांसें लो, फिर ये वाला पैराग्राफ पढ़ा और विजुअलाइज कराया कि आप स्टेज पे खड़े हो, बहुत लोगों के साथ हो, सब लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत एडमिरेबली देख रहे हैं। उसके बाद आप उनको बाउ करके थैंक यू बोल रहे हो। फिर अंदर से आपको लग रहा है मुझे क्यों एम्बैरेसिंग फीलिंग्स भी आती हैं कभी कभी, इसका मतलब है सेल्फ लव थोड़ा कम है। अगर एम्बैरेस हो रहे हो इसका मतलब है सेल्फ लव कम है। तो उसमें है कि कोई बात नहीं, फील करो एंड लेट गो अगर एम्बैरेसिंग फीलिंग भी आ रही है। और उसके बाद उनको थैंक यू बोलो, उनके सारे सपोर्ट, अप्लॉज और अप्रिसिएशन जो वो लोग आपको दे रहे हैं। और ये भी हमने सीखा है कि पूरा विजुअलाइजेशन का प्रोसेस करने के बाद एफर्मेशंस जरूरी है ना। इस बुक में हर बार जब हमने विजुअलाइजेशन किया है और समझाया भी, तरीका यही हुआ है कि फर्स्ट गेट योरसेल्फ इन द मेडिटेटिव स्टेट, नंबर 2 विजुअलाइजेशन ऑफ व्हाटएवर दैट यू वांट, फील इट, हियर इट, okay, talk about it in your visualization, and third is end with a plug in with an affirmation। तो वही अभी भी आगे है। हाँ जी रीना। Here are some affirmations for self-appreciation. I love and accept myself completely as I am. I don't have to try to please anyone else. I like myself and that is what counts. I am highly pleasing to myself in the presence of other people. I express myself freely, fully, and easily. I am a powerful, loving, and creative being.
outflowing. It is the तो वो next. बस एफर्मेशन थे, आप पिक कर लो आपको उनमें से कौन सा करना है, बट सारे ही बहुत अच्छे थे सेल्फ लव वाले। अब हम दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है आउटफ्लोइंग। हाँ जी। Another key principle is that of giving or outflowing. The universe is made of pure energy, the nature of which is to move and flow. The nature of life is constant change, constant flux. When we understand this, we tune into its rhythm and we are able to give and receive freely, knowing that we never really lose anything but constantly gain. Once we begin to learn to accept the goodness of the universe, we naturally want to share it as well, realizing that as we give out of our energy, we make space for more to flow into us. When, through insecurity or fear and a feeling that there is not enough, we try to hold on to or cling to what we have, we begin to cut off this wonderful flow of energy. In the process of hanging on to what we have, we fail to keep the energy moving and we don't make space for new energy to come to us. Energy takes many forms, such as love, affection, appreciation, and recognition, material possessions, money, and friendship. The principles apply equally to all these forms. If you look around you at those who are most unhappy, you will often find that they are people who have a starved feeling in some way and are therefore taking a very grasping posture towards life. They feel that life in general and other people in particular are not giving them what they need. It is as if they have a stranglehold on life, trying desperately to wring out the love and satisfaction they crave, yet actually choking off the supply. And many of us have a little of this tendency. When we find that place within ourselves that is giving, we begin to reverse the flow. True giving happens not from a space of sacrifice or self-righteousness or an idea of spirituality, but for the pure pleasure of it, because it is a fun. It can only come from a full loving place. Yeah, thank you, Reena. I think we'll be able to do only so much today. So this is such a beautiful thing that which has come. See, from beginning, I've been telling you that मैंने ये नहीं chapter पता नहीं बहुत साल पहले ये किताब पढ़ी थी, but anything that comes to your life is to be shared and given. Okay, so if you receive any knowledge, immediately try to give to someone. Okay, which is a very beautiful thing. Don't hold it. If you're holding on to something, you are choking the energy, because everything in this world is about energy. Energy loves to flow. You cannot, static energy starts to depreciate your body and your mind. It can manifest as diseases or as stopping the flow of that thing into your life. Okay, to explain it in Hindi, अगर किसी भी चीज को आप पकड़ के रखोगे, चाहे वो पैसा है, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो कोई प्राइस, बहुत सारा पैसा आपके पास आ रहा है, आप देने से कतरा रहे हो, आपके पास इतने सारे कपड़े हैं, यू आर नॉट गिविंग अवे, आप जैसे कबर्ड खोलते हो धार उसमें से सामान गिरने लग जाता है, इतने सारे, बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं कि इतने कि आधे आपने 2 साल से यूज भी नहीं किए, इतना सारा मेकअप है, ठीक है, वो बस रखा हुआ है क्योंकि क्लिंग करने की, क्लिंग वाली एनर्जी है कि नहीं रख लो। अब वो 2 साल से काम में नहीं आया तो अब आगे क्यों काम में आएगा? किसी भी चीज को होल्ड ऑन टू, अपनी नॉलेज, अगर आपने कहीं से कोर्स किया, जैसे अभी मैं कोर्स कर रही हूँ, आई एम डूइंग अ मास्टर क्लास विद अ वेरी वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रेनर्स,
So I'm not doing it. I take notes so that I can share it. अगर मैं कोई किताब पढ़ रही हूँ तो there's a particular book also I'm reading right now. ठीक है, so उस बुक में से मुझे जो पॉइंटर्स मिलते हैं ना, मैं आप लोग के साथ शेयर करने के लिए निकालती हूँ. Because we want to learn new things. I don't want that energy to be stuck. I mean, the knowledge which is coming from some amazing teachers, and because I have that time and that grit or desire to educate myself more and more into the self-help book while my other course books also, because मैं एक educator हूँ तो मुझे उसमें भी अपने आप को लगातार अपडेट करना होता है. और अपडेट क्या मतलब मजे से करती हूँ, मतलब I look forward to it. So this is the reason I balance my life, because I want to give a lot of time for my self growth, because मेरी self growth की वजह से बहुत लोगों की जिंदगी मैटर करती है. You know, I make careers. मेरा ऑफिस ऐसा है कि I'm an educator, so those people are doing well in their life, so I have to give them more, I have to give them new. So there's a constant flow of knowledge which is happening like a circle. ठीक है, सेम थिंग इवन इफ इट इज व्हेन वी डू आवर मॉर्निंग सेशंस. बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स मैं पढ़ती, समटाइम्स इट्स जस्ट 4 pages, इट्स नॉट टू मच, बट it says release it with joy, not thinking that अरे spirituality है, लिखा हुआ है कि दसवंत करना चाहिए, दसवंत is 10% of whatever you've made, you know, you should give, या not because of that reason, because आप दिल से वो कर रहे हो, खुशी से दे रहे हो जो भी चीज है. जब आप लोगों के लाइफ में कोई एक्सपीरियंसेस होते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रैक्टिसेस दैट यू डू, आप सब देखो कि मोर पीपल आर शेयरिंग, मोर इज कमिंग टू देयर लाइफ. व्हाई सुनैना इज फ्लडेड विद सो मेनी एक्सपीरियंसेस, है ना? इट्स नॉट दैट शी डजंट हैव चैलेंजेस इन हर लाइफ, शी हैज लॉट्स ऑफ चैलेंजेस इन हर लाइफ, so big also, very मतलब so big sometimes, but why counting the blessings amongst them भी आप अपना गोल्ड उठा के शेयर कर रहे हो कि देखो मैंने ये प्रैक्टिस की, इससे मुझे ये बेनिफिट हुआ. वो इसलिए थोड़ी शेयर कर रही हैं कि देखो वाओ आई एम लाइक सुपर पावर एंड आई एम लाइक अ सुपर वुमन. शी इज जस्ट शेयरिंग दैट सी हाउ यू कैन ऑल्सो चेंज योर लाइफ by doing what I have done. When Tejal has shared that मैंने water affirmations किए, मैंने gratitude लिखा, मैंने 100 blessings करी, उन्होंने उनका तरीका अलग था, वो भी बहुत अच्छा तरीका था कि 108 की जो माला होती है, जो हमारी पूजा की माला होती है जिसमें 108 स्ट्रिंग्स होती हैं, तो वो 108 बार थैंक यू बोलती हैं फॉर माय परफेक्ट हेल्थ, थैंक यू फॉर माय परफेक्ट हेल्थ, 108 बार तो माला के साथ करती है. चलो सब अपना अपना तरीका ढूंढ लेते हैं, एज लॉन्ग एज ग्रेटिट्यूड में रहें. तो ये भी तो एक चीज पता लगी कि ठीक है, कभी नहीं लिख पाए, किसी कारण से नहीं लिखने का मन कर रहा है, तो आप अपने मंदिर से या जो भी आपका पूजा घर है या पूजा का वहां स्थान है, वहां से आप 108 की माला उठा लीजिए और 108 बार बोलिए थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव, thank you universe for my shoes, thank you universe for a wonderful set of clothes that I have in my cupboard, thank you universe for the beautiful air that I breathe, thank you universe मैं इतना अच्छा खाना खाती हूँ जिससे मेरी बॉडी और हेल्थ बहुत अच्छा होता जा रहा है, thank you universe मेरे बालों के लिए इतने अच्छे मेरे बाल हैं, thank you universe that मेरे पास खाना खाने को पैसा है, यू नो, बहुत आराम से, थैंक यू यूनिवर्स दैट मेरे पास एक बहुत ही लविंग और सपोर्टिव फैमिली है, थैंक यू यूनिवर्स दैट यू नो मैं लिख पाती हूँ, थैंक यू यूनिवर्स दैट मेरी उंगलियां हैं जिससे मैं बहुत सारे काम करती हूँ. इस तरह 108 की आप माला जप लो थैंक यू वाली, है ना? तो ये सब बताते हैं तो इससे पता लगता है ना. तो ये किया था तेजल ने, और दूसरा बताया था कि मैं वाटर और फूड एफर्मेशन बहुत ज्यादा करती हूँ, और क्योंकि उनकी ब्लड शुगर HbA1c was 12.5 or something, so she would hold her water and tell that thank you for my perfect, you know, blood sugar level to be normal. और देखो 12.5 से 5.2 आ गई, है ना? मतलब एक्सट्रीमली डायबिटिक से नॉन डायबिटिक बन गई, isn't it? तो ये सारी प्रैक्टिसेस कर करके जब वो लोग शेयर करते हैं, अब उनकी जिंदगी में तो और आएगा ना, क्योंकि जो एनर्जी आप ब्रह्मांड में देते हैं वो मल्टीप्लाई होके आपके पास वापस आती है. ठीक है, तो अब और आप लोगों को बताना मतलब आपने ओपन एयर डिक्लेरेशन कर दिया, है ना? बिकॉज जितने भी 130 पीपल हम होते हैं या जितने भी होते हैं ग्रुप में, तो पता नहीं कितने 1000 होंगे, तो वो सारी एनर्जी उन लोगों तक पहुंच रही है, और आपको पता नहीं है आपकी शेयरिंग से कौन से पर्सन की जिंदगी बदल रही है ना? कई बार मैं बोल देती हूँ ऐसे ही कोई चीज, नहीं पता होता, मतलब मुझे ये ऑफिस जाके जो हमारे स्टूडेंट्स बोलते पता, मैंने जैसे निकिता को बहुत सालों पहले बोला था, वो पहली बार उसने मुझे देखा था पीतमपुरा में, बहुत साल पहले की बात है, 2014 या 15 की, तब वो हमारी स्टूडेंट हुआ करती थी. ठीक है, तो उनको मैंने रैंडमली ऐसे ही बोल दिया, तो उन्होंने मुझे देखा, तो वो कहती है मैं रिसेप्शन पे बैठी थी और मैंने सडनली देखा कि आप कभी अंदर जा रहे थे कभी बाहर आ रहे थे, यू नो, आई डोंट इवन रिमेम्बर ऑल दैट, शी सेड, एंड आई नोटिस दैट देयर वाज समथिंग अबाउट यू. फिर उन्होंने रिसेप्शन पे जाके पूछा कि वो एक मैम थी जो अभी यहाँ पर हैं,
वो उनका नाम क्या है तो उन्होंने बताया। फिर उसके बाद मैं अपने ऑफिस में कैबिन में जाके बैठ गई और मैं अपना काम कर रही थी अपने लैपटॉप पे। फिर वो रिसेप्शन वाली पर्सन ने आके कहा कि एक हमारी स्टूडेंट है वो आपसे मिलना चाहती है। और वो निकिता केम टू माय रूम एंड देन आई मेड अ सिट देयर। शी सेड नहीं मैं आपको नोटिस कर रही थी, मुझे ऐसा लगा कि आप में ना कुछ अलग बातें, एक अलग सा हो रहा है। मैंने कहा मैं आपसे आके बात करती हूँ। फिर मुझे पता लगा कि आप हमारी कंपनी में यही कैटेगरी हेड करते हो जिसकी मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपसे बात करूँ। आई जस्ट केम टू मीट यू एंड विश यू। मैंने कहा ओके फाइन। फिर कहती है, मैंने कहा कौन सा कोर्स कर रहे हो, तो कहती है मैं ये 4 कोर्सेज कर रही हूँ आपके यू नो लाइक ऑफिस से। तो आई जस्ट टोल्ड हर रैंडमली कि मतलब तब तो मैं इस प्रैक्टिसेस में नहीं थी, बट मे बी दैट वाज ऑलवेज देयर। सो आई जस्ट टोल्ड हर दैट आई गॉट अप एंड आई हग्ड हर एंड आई टोल्ड हर दैट यू नो एक दिन आपकी वहां तक पहुंचना आप निकिता जिंदगी में जब आपके ऑफिस की दीवार पे सारे आपके सर्टिफिकेट सजे हुए होंगे, इतने सारे, और बहुत सुंदर आपका ऑफिस होगा एंड यू विल बी सुपर सक्सेसफुल इन लाइफ। बस ये बोल के वो चली गई। उसके बाद 2.5 साल के बाद उन्होंने मुझको एक फोटो भेजी और जिसपे बहुत बड़ी वॉल थी, बहुत ही मतलब ह्यूज वॉल उनका, और उसपे सारे सर्टिफिकेट्स लगे हुए थे। माय गॉड। एंड देन मैं तो भूल गई थी बिकॉज कई चीजें मैं ऐसे बोल के भूल जाती हूँ, मतलब यू नो यू जस्ट गेट गोइंग। एंड फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने आज से 2.5-3 years back you had told me that you have to reach that level of success where you have a beautiful office and you have your wall full of your achievements and certificates, and today is the day when I'm sending you that wall and it was so overwhelming to me, you know. So this is how universe works. तो हमको पता भी नहीं होता है कि हम क्या ऐसी चीज करेंगे जिससे लोगों की जिंदगी बदल जाती है। आउटफ्लोइंग का मतलब यही होता है। तो you have to keep circulating whatever is there. It's a course, जैसे मैंने you know like कोई भी पर्टिकुलर कोर्स करते हैं, immediately come back and write a book on it. जब मैंने योगा किया, योगा मैंने 2 लेवल्स में किया था। एक मैंने बेटर लिविंग योगा का कोर्स किया था जिसमें मुझे बेसिक योगा करने में मास्टरी हो गई थी। उसके बाद देन आई वांटेड टू डू अ हायर कोर्स जिससे मैं प्रोफेशनली योगा को आई कुड ब्रिंग टू द वर्ल्ड, एंड देन आई डिड द नेक्स्ट कोर्स। जबकि मेरे लिए टाइम का बहुत वो होता है, बट मैं फालतू की चीजों में टाइम एक्चुअली वेस्ट नहीं करती हूँ, ऑलवेज यूटिलाइज माई टाइम एंड ऑल। सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। वो सिर्फ सैटरडे संडे मेरी क्लासेस होती थी इतने सालों तक, इतने महीनों तक, 8 महीने सैटरडे संडे। सो आई डिड नॉट वंस थिंक दैट मेरा यू नो मैं सोशलाइज कैसे करूंगी, मुझे सिर्फ सैटरडे संडे मिलते हैं, मेरा आराम का टाइम होता है, मैं वो सारी चीजें कर सकती हूँ, मेरे ट्रैवल पे फर्क पड़ेगा क्योंकि मैं इतना ट्रैवल करती हूँ, मैं पर्सनली तो ट्रैवल ही नहीं कर पाऊंगी। नो, एवरीथिंग वाज सेकेंडरी। द होल आइडिया वाज दैट आई वाज ग्रूमिंग माई सेल्फ एंड आई हैव बेनिफिटेड आउट ऑफ इट इन सच अ बिग वे। And then the moment I came back to you know to my office and I wrote 2 books of, one was certificate course in yoga and one was yoga for holistic health. तो ये 2 किताबें मैंने लिखी जैसे ही मेरा कोर्स खत्म, टाइम नहीं वेस्ट किया बिल्कुल भी। सो आउटफ्लो आई कुड हैव केप्ट इट टू माई सेल्फ, मैं तो जी अपने लिए कर रही हूँ ताकि मैं और मेरी फैमिली बहुत अच्छे रहे। ऐसा कभी भी नहीं होता। मुझे अगर ये पता लगता है कि कभी भी कि मोरिंगा खाने या पीने की वजह से ये हेल्थ बेनिफिट होता है तो मैं डिक्लेयर करती हूँ, you know like that, why don't you do it, because it really affects in a big way. And I always do it. People who are you know who've been attending any office webinars know that I don't hold anything from telling anyone. So ये आउटफ्लो पैसे का, एक्सपीरियंसेस का, छोटी छोटी चीज जो आपने सीखी हैं देनी है किसी को, है ना। मैं हमेशा बोलती हूँ अपना डीक्लटर करो, अपने कपड़े देना शुरू करो, बिकॉज मुझे पता है कि लड़कियों को ना बहुत दिक्कत होती है एक्सपेंसिव साड़ी और कपड़े देने से। इतना लालच होता है हमारे मन में, जब तक वो ग्रीड नहीं जाएगा ना हम बिलो द लाइन ही रहेंगे, है ना। तभी मैंने आपको एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मैंने अरमानी की टी शर्ट एक भी बार नहीं पहनी है, एक दिन रात को पहन के मैं सोई थी बस, ठीक है। वो मैंने बहुत सेल्फलेसली अच्छे से दे दी है। आपके कबर्ड में वो क्या कर रही थी? कुछ नहीं कर रही थी। आपने पहनी 2 साल से, 3 साल से नहीं पहनी ना, दे दो, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है उस तरह का ग्रीड करने से या कुछ करने से। बहुत सारे लोग हैं और फिर इतनी ब्लेसिंग के साथ वो कपड़े निकालो कि ये जिसकी भी परिवार में जा रहे हैं, you know they should go to the people who really need it. It should always be like that. उसमें लिखा हुआ है as your duty मत करो, you do it out of joy that I want to give, I want to share my knowledge, I want to you know share the secret of my this.
मतलब जैसे कभी भी कोई वेट लॉस करता है तो कोई पूछता है उससे कि कैसे वेट लॉस किया, नहीं बस थोड़ा जिमिंग, थोड़ी डाइटिंग। अरे इससे ही थोड़ी हुआ था। आप एक्सप्लेन करो उसको, क्या कहाँ कहाँ पे आपके सामने जब शुगर आई आपने किस तरह से सेल्फ कंट्रोल किया, उस शुगर का रिप्लेसमेंट क्या था, है ना। वो शेयरिंग होती है। अच्छे से शेयर करो, ये मत सोचो मुझे अपने पास पकड़ के रखना है और ये करना है। So which is like, this is how we become. So me and Sunita, we are neighbors. You know, like we share a lot of our clothes sometimes, you know, when she has to go somewhere, because हम सब लड़कों के साथ रहते हैं. I live with 3 boys, okay, with husband and 2 sons. Sunita lives with 3 boys, 1 husband and 2 sons. तो हम लड़कों के बीच में रहते हैं, प्लस हम दोनों को बहुत शॉपिंग वॉपिंग करने का वो है, तो हम बहुत इजीली कभी भी किसी को कोई भी चीज, जैसे एक बार मैं कुर्ता पहन के गई थी विच आई हैड गॉट फ्रॉम कैलकाटा के हिंदुस्तान कॉलोनी से, वहां पे सारे वो ना कैलकाटा का तांत का काम मिलता है, बहुत सुंदर कुर्ता था. So I went to office and one of my faculties who later became the head, she told me that मुझे इतना अच्छा लग रहा है, आप मुझे बताओ, I'm ready to pay any price for it and I want it from there. I said अब तो मैं कैलकाटा से आ गई और exactly same तो मिलेगा नहीं. That very day मैं घर गई, मैंने उस कुर्ते को ड्राई क्लीन कराया और मैंने उसको गिफ्ट किया. मैंने कहा this is a gift from my side. ठीक है, तो और बहुत जॉय से दिया था, बिकॉज वो इतना ज्यादा बोल रही थी कि उसको इतना अच्छा लगा. मैंने कहा गॉड मेरे पास तो इतने सारे पड़े हैं. सो आई एम नेवर इनटू, यू नो, वो लालच अपनी जिंदगी से कांटे की तरह निकलना बहुत जरूरी है. वो कांटा है एक्चुअली, वो अंदर इट इज हर्टिंग यू, इट्स नॉट ब्लॉकिंग सर्टेन थिंग्स, बिकॉज ग्रीड इज नॉट अ फ्लो, इट इज नॉट अलाउिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी, है ना. तो कोई छोटा सा भी डिफरेंस आपकी लाइफ में होता है, उसको शेयर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फिर वो एनर्जी जब आप देते हो, आप बहुत लोग यू डोंट नो कि किसकी लाइफ आपकी शेयरिंग की वजह से चेंज होती है. क्योंकि देखो डिजायर, इनेट डिजायर हम सबको है, गेटिंग बेटर, गेटिंग बिगर, यू नो, हैविंग मोर, ऑल दैट इज देयर, वो सब में डिजायर होता है. बट कई बार ना रास्ता नहीं पता लगता. तो इसीलिए जब हम एक्सपीरियंस भी इसमें भी ग्रुप में भी शेयर करते हैं, तो हम टूल भी शेयर करते हैं कि देखो मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, है ना. तो जितना मुझे पता लगता है कि जितना ज्यादा, जब पहली बार मेरे 3 बड़े बड़े क्लोजेट्स हैं घर में, ठीक है, जिसमें सिर्फ मेरे कपड़े हैं. और ये कांस्टेंट यू नो सेंस ऑफ होता है. माय हस्बैंड ऑलवेज सेज टू एवरीवन कि नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कि अब जो हमारी शू शेल्फ है, हमारी बड़ी अच्छी सी शू शेल्फ है, शू क्लोजेट है, कह रहे मैं सोच रहा हूँ मैं अपने कपड़े ना वहीं रख लूं, क्योंकि ये कबर्ड भी दीप्ति का है और ये वाला भी दीप्ति का है और ये वाला भी दीप्ति का है और ये वाला भी दीप्ति का है, यू नो. और आधे और कुशल और शिवी के क्लोजेट में 50% दीप्ति का है, 50% कुशल का है, और शिवी के कबर्ड में 50% दीप्ति का है, 50%. So which is like a standing joke, you know, in our family. So it is like, so but actually वो मजाक ही है, मेरे सिर्फ 3 closets हैं. So उसमें so when I started, तो मैंने first कबर्ड जब declutter किया, मेरे पास 1 लाख रुपए आए. मुझे नहीं पता कहाँ से आए वो और कैसे आए, मुझे नहीं पता था वो मेरे पास थे भी. ठीक है, फर्स्ट. सेकेंड टाइम मैंने डिक्लटर किया, तो मैंने आपको एक्सपीरियंस शेयर किया था. जब सेकेंड और थर्ड कबर्ड मैंने एक ही दिन किए थे, अभी 3-4 दिन पहले. तो माय सीए कॉल्ड अप एंड ही सेड दैट आपका पैसा प्रोसेस में है एंड इन 4 वर्किंग डेज इज गोइंग टू कम टू यू, you know. So this is how it benefits. That's why I keep telling you, because all these practices first I do in my life, then I tell you. Okay, nothing is not tried and tested on me. फर्स्ट आई ऑलवेज ट्राई. अगर मैं किसी को बोलती हूँ कि मोरिंगा खाने से आपकी एनर्जी 10 टाइम्स हो जाएगी, यू नो, आपके सारे एक्स एंड पेन्स चले जाएंगे और इस तरह, दैट मीन्स आपका मोरिंगा, आई हैव ऑलरेडी डन इट. फिर मैं आपको बताती हूँ. इफ आई हैव नॉट डन इट, आई डोंट टेल यू. So there's a constant, you know, at times this thing. So everything is tried and tested, just do it. So if I'm telling you moringa खाओ, order करो, online order करो, आटे में गूंद लो, उसको पानी में घोल के पियो, जिस भी तरह से आपको लेना है. It works wonders in terms of health. Anybody who has aches and pains, chronic problems, blood pressure, high cholesterol, hypothyroidism, PCOS, or whatever for that matter, RA. So अगर कुछ भी है इसमें से, try eating moringa. Down south वहां का साग बनता है, you know, so people have moringa. It's called drumsticks की leaves basically. So drumstick आप खा सकते हो, बहुत हेल्दी होती है, उसकी leaves उससे भी ज्यादा हेल्दी होती है. So in whichever way, क्योंकि नॉर्थ में, दिल्ली में मैं रहती हूँ, यहाँ मिलती नहीं है, so I have to order it online from Amazon. So these little things, you know, is going to, so share more, overflowing है chapter का नाम, अपनी जिंदगी से overflow कराओ, that's what it means. So that's it, we'll be doing so much. Thank you Reena for reading so beautifully. बड़े दिनों के बाद आपने आज पढ़ा है, कहाँ गायब थे? यस मैम, मैं आउट ऑफ स्टेशन थी तो इसलिए. Your absence was felt because your presence is so big. Oh my God.
So sweet of you, मैम. मेरा दिन बन गया आज. I was also eager to read. हाँ. रीना मैम आप Anyone? लाइव आइए ना प्लीज। हाँ Sorry. जी. हाँ, बिल्कुल आप बिल्कुल. लाइव या Many happy returns of the day, dear. थैंक यू। Yes, Priya, we all wish you with lots of success, with lots of abundance. May all your dreams and desires come true. रात में अच्छे से सोना शुरू करो, because आपने ग्रुप में बहुत बार बोला है कि मैं पूरी रात सोई नहीं, मैं पूरी रात सोई नहीं, ये अच्छी एनर्जी नहीं होती है। अब से आप देखो, लिखो आपको जिंदगी में आज से क्या क्या चेंजेस करने। बर्थडे बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है, आप लिखो कि आपको जिंदगी में अब से क्या क्या चेंजेस करने हैं, कि आपको बाय 10 o'clock you go to bed very late and you don't sleep in the night. Okay, so अभी तो ठीक है, age is by your मैं ना side, actually but आज क्या हुआ था, कल क्या हुआ था, मैं थोड़ा जल्दी सो गई थी, फिर मतलब अराउंड 9 o'clock में सो गई थी, फिर 1:13 पे मेरी नींद खुली, फिर नहीं नहीं नहीं, कल तो बर्थडे था बाबा, 12 बजे उठना होता है, वैसे मैं बता रही हूँ, है ना। और स्पिरिचुअलिटी हमेशा, हमारे स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि आप अपने आप से कनेक्टेड हो और अपनी पावर्स को जानो। है ना, तो आप सारी चीजों की लिस्ट बनाओ, जो जो अब से आप करोगे, जो आपकी प्रैक्टिसेस होंगी या जो भी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। एंड वी ऑल विश यू अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड अबंडेंस एंड you know that you get the love of your life that you're looking for. So इस साल आपको बहुत अच्छा प्यारा सा पार्टनर मिलेगा आपको अपनी जिंदगी में। और पार्टी कहाँ कर रहे हैं ये बट बताओ, हाँ, आपने बट बोला बी था 9 वाइज इन, पार्टी बी करनी है। वेरी वाइज इन। आपने बोला था कि 9th को ही पार्टी करेंगे, अब बताओ कहाँ करनी है पार्टी। ये G20 चल रहा है। हाँ जी, बताओ आपका क्या करनी है। G20 समिट चल रहा है, बहुत बड़ा रीजन है सेलिब्रेट करने का, और आपका बर्थडे साथ में। तो हम तो आज मतलब आई थिंक दिल्ली सेमी ऑपरेट कर रहा है आजकल, तो बट सेलिब्रेशन तो करना चाहिए। ये मेरा तो कांस्टेंट एफर्मेशन है, जो मैं कल भी ड्राइव करते करते यही सोच रही थी, वाओ लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। मैंने तो आपके तो ऊपर छोड़ा हुआ बर्थडे, है, कहाँ सेलिब्रेट करना है, चलो मुझे लेके। मैं क्यों अपना दिमाग लगाऊं, बर्थडे आपका है, आप बता देना, मैं आ जाऊंगी। अपनी बर्थडे पे दिमाग लगाऊंगी मैं कि मुझे कहाँ से आपको बुलाना है, क्या क्या करना है। उसमें भी दिमाग मेरी बड़ी ईना ही लगाती है, मैं नहीं लगाती, मैं बस बिल पे करती हूँ। मुझे दिमाग आप लगाने की सबसे आदत छूट इजी हो गई वहां पर है। select कर लेते हैं। यूनिवर्स है ना, अच्छा ध्यान सीपी, रखने के। सीपी सबके लिए वैसे बेस्ट रहेगा आई थिंक, है ना, पहुंच सीपी जाएंगे। बंद है बेटा, सीपी बंद है अभी, कनॉट प्लेस बंद है, क्योंकि G20 के सारे होटल्स उसके अराउंड सेंटर्ड है, और सीपी से होके प्रगति मैदान वो लोग आ रहे हैं। ताज विवांता, जो ताज मानसिंह है, जो ये वाला ताज होटल है खान मार्केट वाला, वो है क्लैरिजेस, वहां पे सारे डेलीगेट्स रह रहे हैं। तो वो हाई सिक्योरिटी है भाई, विदेन आए हमारी कंट्री में, बहुत बड़ी बात है, सुपर पावर कंट्री के जो प्रेसिडेंट है। पता है सो इन्फ्लुएंसर टॉक के लिए भी मुझे इनविटेशन आया था, मैंने कहा ठीक है आएंगे, कभी आएंगे। वेरी वेरी गुड, जाइए आप, अमेरिका नहीं, जाइए, हर जगह और जाइए अपनी विजय टॉक्स सर के से लिए। डिसाइड करवाते हैं, विजय सर बताएंगे आज कहाँ मिलना है। अच्छा, अरे वाह। विजय सर, आपकी वजह से हमें भी पार्टी मिल जाएगी। बताओ ठीक है जी, decide करो। चलो, वी हैव 2 hands raised. Yes, Dishan, I'm excited to listen to your debut experience. Hello, ma'am. Sharing, Can you put on your video? I'm connected through my client laptop. I'm not connected आज phone से, so इसलिए Okay, while reading doesn't also I matter. couldn't. हमको ना एक्चुअली, हम लोग ओल्ड स्कूल के आधे से ज्यादा लोग हैं, who are all 40+, तो हमको ना ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों की आदत है, क्या करें। अभी सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो। सॉरी, हाँ जी, सॉरी। आज एक सॉन्ग भी करवाना है श्याम सर से। अच्छा ठीक है, हाँ, नहीं आज संडे नहीं है, कल है श्याम जी का सॉन्ग। श्याम जी आपको एग्जैक्टली 24 घंटे मिलते हैं। हम वैसे हाँ भी जी हम लोग दिशान, स्पोर्ट्स क्लब में हैं तो नहीं गा पाएंगे इस अवे फ्रॉम। अच्छा नहीं, श्याम जी को एग्जैक्टली 24 घंटे मिलते हैं सोचने के लिए कि कल वो ना कौन जिस सा जिसको गाना सॉन्ग गाएंगे। भेजना ना अपनी आवाज में, वो ग्रुप में भेज देना। हाँ जी दिशान। मैम शेयरिंग तो है, बहुत सारी ऐसे माइन्यूट थी, बट एक डाउट था, मतलब मैं पूछ सकता हूँ अभी? हाँ हाँ बिल्कुल। तो बेसिकली
I'm not a journaling person. I'm trying to develop a habit. So most of the time, जैसे I end up giving gratitude to universe and things on my phone. But जब मैं phone Can we please mute ourselves, the others? मैम हाँ, सॉरी, मेरा ना वो म्यूटिंग चला गया है. आई कांट म्यूट एनीवन. अच्छा, मैं जैसे कर देती होस्ट हूँ. नहीं हूँ. मैं कर देती हूँ. दिशांत एक सेकेंड. ओ बहुत सारे लोग अनम्यूट है. रेनू, रीना सक्सेना, अमृता केडिया. ध्यान रखो जी अपनी अपनी डिवाइसेस का. हाँ जी दिशांत, आप भी म्यूट हो गए. आप अनम्यूट कर लो अपने आप को. हाँ, मैं ये कह रहा था कि सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई राइट ग्रैटिट्यूड स्पेसिफिकली. जैसे ब्लेसिंग्स होती हैं. सपोज आज मेरे को एक फ्री उबर की राइड मिल गई, तो मैंने आज फटाफट जब मैं राइड में हूँ तो मैंने ग्रैटिट्यूड लिख दिया, ब्लेसिंग लिख दी. तो मेरे दिमाग में एक बैक ऑफ द हेड ऐसा होता है कि अगर मैं फोन पे लिख रहा हूँ तो उसका इम्पैक्ट कम होगा और शायद मैं वहीं पे उसका इम्पैक्ट किल कर रहा हूँ. मैं बहुत ज्यादा स्केप्टिकल हो जाता हूँ. जैसे आप स्ट्रेस देते हो ना कि हमें जर्नल करना चाहिए, लिखना चाहिए, बट मैं बहुत सारी चीजें ना फोन पे करता हूँ. मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता हूँ कि अगर मैंने जर्नल पे से थोड़ा सा वल्नरेबल होकर लिखा और कोई पढ़ लेगा घर पे या वैसे, मतलब वो स्पेस नहीं मिल पाएगी मुझे. तो और जर्नल कैरी करना भी थोड़ा सा, तो हाउ एक थोड़ा सा रीअश्योरेंस चाहिए कि मैं बहुत सारा फोन पे लिखता हूँ और मैं फोन पे ही लिखता रहता हूँ. जैसे इफ सपोज मेरे को ऐसे मोमोज वाले को ब्लेस करना है या किसी अपने बॉस को ब्लेस करना है, या आई हैव टू जस्ट ऐसे मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन होता है ना. सो आई गॉट एंग्री और मैड एट माय मॉम, सो आई हैव टू लाइक forgive myself. So I quickly forgive myself, writing those things that I forgive myself and bless my mom. तो मैं फोन पे ही बहुत सारा लिखता रहता हूँ. तो इसका इम्पैक्ट बहुत कम होता है, ज्यादा होता है, या क्या होता है? मैं लिखता हूँ और फिर मेरे को लगता है इसका तो कोई फायदा ही नहीं है, बट मैं फिर भी लिखता रहता हूँ. Which is perfect. हाँ, मेरे को बस यही चीज वो करनी है कि मैं फोन पे ही करता हूँ बहुत सारा. Yeah, जिसको जिससे कनेक्ट आता है. See, I mean, I'm good that I spoke about the old school, thoughts that we have. So this generation actually, so when even, like my kids would take a dictation on the laptop, the moment I would say, even in grade 2 and 3, I would say that, okay, dictation time, tab dictation hum bahut dete the, dictation time. So they would, yes, mama, start. It was like that. So it's absolutely okay. What works for, as long as you're in gratitude, it's about the feeling. It is not about the technicality of it. As I mentioned, that Tejal does it with 108 की माला, है ना? So बोल के. So बोल के भी तो आपके कान सुन रहे होते हैं. So yeah, that works for her and it has worked for her. And this is working for you, which is perfectly fine as long as you are in gratitude. And this is so sweet, which you have shared, that down to the last detail कि मोमो वाले को आप थैंक यू लिखते हो, अपनी मम्मा पे गुस्सा करते हो तो अपने आप को फॉरगिवनेस थैंक यू लिखते हो और उनके लिए ग्रेटिट्यूड लिखते हो. This is the way to lead life. And Dishant, you're going to go places in life. By the time you are 35 and 40, you would be like, हमको आपसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा. मैं So, मन में भी कर सकता हूँ मैं बहुत ज्यादा, अगर जैसे हाँ सपोज फोन बिल्कुल. पे नहीं कर रहा तो. It's all about the feelings. It's about what's in your mind. If you have gratitude in your mind, if your way of being has become like that, it's all about being, doing, having, na. So अपना being अगर gratitude का है, forget about the technicality. Do what works for you. That's more important. Every person is different, है ना? ओके मैम. Yeah. बहुत ज्यादा Good luck. क्वेश्चन करने लग जाता हूँ मैं, थोड़ा सा ना नहीं, अरे लॉजिकल. क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा ना. जब क्वेश्चन करते हो तो then we don't see the time because there has to be clarity and it is lovely and thank you so much for being so sincere about everything. Yes, Amrita. Hello, ma'am. Hi. So, ma'am, day before yesterday, BLCC का alumni meet था. तो वो एक मेरी ड्रीम थी जो मैनिफेस्ट हो गई. एक्चुअली जब मैं 2020 में पहली बार एलुमनाई मीट अटेंड किया था मैंने, तब मैंने से जब सब अपना शेयरिंग दे रहे थे, अपना शेयर कर रहे थे एक्सपीरियंस, तब मैंने विजुअलाइज किया था. तब मैं इस जोन में नहीं थी. तब मैंने बस ऐसे विजुअलाइज कर लिया था कि आई विश मैं ऐसे अपना, मैं जब अगर मुझे ऐसे एलुमनाई टॉक देने बोलेंगे तो मैं कैसे कैसे दूंगी, क्या बताऊंगी, क्या लाइफ की स्टोरी शेयर करूंगी, कैसे लोगों को इंस्पायर करूंगी, ये सब सोचा था. और फिर मैं भूल गई थी उस बारे में इवेंचुअली. देन उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन प्रिंसी मैम का
डे बिफोर यस्टरडे कॉल आया कि अमृता, डे बिफोर यस्टरडे उनका कॉल आया कि अमृता एलुमनाई मीट में वो है, तुम दे पाओगे अपना टॉक? तो आई वाज लाइक ओ ऑल ऑफ अ सडन मेरा ये ड्रीम जो है वो पूरा हो गया था, विच मैंने एक बार बोल के छोड़ दिया था, मतलब लाइक आज आपने कहा ना सरेंडर, तो मैंने सरेंडर कर दिया था बिकॉज एंड वो ऑटोमेटिकली अपने आप फुलफिल हो गया। Yeah, amazing. It was actually law of attraction क्योंकि I was on the other side of it. Also, my team was taking care of it. So that was literally a last moment entry. So, you pulled it towards, जैसे वो है ना रोंडा बर्न की बेटी का जो वॉलेट खोया था, तो वो फार्मर ने गिव अप कर दिया था कि नहीं, अब क्या, मुझे इसमें कुछ है ही नहीं एड्रेस, तो मैं दूं किसको वापस जाके, है ना। लेकिन क्योंकि वो लगातार ग्रैटिट्यूड कर रही थी, तो यूनिवर्स ने उस फार्मर को अपने फील्ड से वापस, वो अपने घर पे गए, वो फार्मर जो थे, और उन्होंने दोबारा से कहा कि ठीक है, एक लास्ट टाइम मैं ट्राई कर लेता हूँ। दिस इज हाउ इट हैपेंस। सो जो चीज नहीं भी डेस्टिन्ड होती है ना, द मोमेंट यू पुट योर इंटेंशन एंड योर डिक्लेरेशन इनटू द यूनिवर्स, इट कम्स बैक। सो यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड आपके तो 10 की 10 ड्रीम बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। थैंक यू सो मच Your मैम। level of practice is like that because I've closely seen you. You stayed in my house so many times with me, so I see your practices and your being has become grateful. So, थैंक यू सो मच। thank you. Then Apun, nahi, Sunena, your hand was raised. I had seen. या दीप्ति, वो क्वेश्चन था, कोई नहीं, मैं आपसे पूछ लूंगी, बाकी बाकी लोगों का भी है, पहले वो मैं तो पूछ लूंगी आपसे अच्छा, बात। हाँ, वो वैसे खत्म हो गया है, आप क्वेश्चन पूछ लो। प्रिया तनेजा को बोलना है तो हम उनको दोबारा से टर्न दे देंगे। एक्चुअली इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपसे एक बार पहले भी पूछा था, एक मेरा चेक है जो मैं हर बार लिखती हूँ मैजिक चेक में, तो वो इट्स बीन 6 months, बट मेरा माय गट नेवर सेज कि मैं फिगर चेंज करूँ, एंड यू आल्सो सेड डू नॉट चेंज इट, तो मैंने सो नाउ अब मैं बहुत डेलिबरेटली उसको क्रिएट कर रही हूँ। सो आई एम इन दैट प्रोसेस। अब उस अमाउंट से एक चीज नहीं खरीदी जा सकती, जैसे आपने पर्टिकुलर मेंशन किया, जस्ट टू बाय, मतलब इफ यू वांट टू हैव जस्ट वन थिंग, बट ऑनेस्टली इट इज लाइक, मुझे मालूम है वो प्रोसेस में आ चुका है, बट उससे मैं एक चीज नहीं खरीद सकती, बिकॉज उससे आने से मेरे मल्टीपल ड्रीम्स पूरे होंगे, फॉर मी एंड फॉर द सोसाइटी टू। तो वो मेरा था कि आज कि मैं तो उस अमाउंट से एक चीज तो नहीं, आई एम, मतलब वो मैंने पूरा प्लान बना रखा है। According to practice, Sunaina, it has to be for a particular thing. तो फिर मैं चेंज करूँ इसका मतलब, हाँ, वो फिर आप मनी चेंज अलग करो से और क्रिएट उसको मनी करूँ। मैग्नेट में डालो। ये जो अगर आप अमाउंट मैनिफेस्ट कर रहे हो ऑफ समथिंग जिससे बहुत कुछ हो जाता है, ये मनी मैग्नेट चैप्टर जो था ना, चैप्टर नंबर 9, जहाँ पे हाँ जी, थैंक यू फॉर द मनी करते हैं और एज इफ यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट, तो ये मनी मैग्नेट चैप्टर की एक्सरसाइज है। मैजिक चेक पे वो अमाउंट लिखना है विच यू वांट फॉर ए पर्टिकुलर थिंग। इट कुड बी अ फोन, इट कुड बी अ गिफ्ट यू वांट टू बाय फॉर समवन, मे बी योर डॉटर, that you want to give a one particular thing जिसका पैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो महंगी चीज है। दिस इज फॉर वन पर्टिकुलर थिंग। वो स्ट्रिक्टली रॉन्डा बर्न ने मेंशन किया है। हाँ I जी, mean, it could be a home also, like हाँ, इट one कुड बी अ particular. होम ऑल्सो, एब्सोल्युटली। Okay, बिकॉज ये okay. चेक धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं। जैसे पहली बार जब मैंने बढ़ा था तो ये 60,000 का भरा था मैंने। उस वक्त रेजिस्टेंस भी आ रहा था क्योंकि फुल ऑन कोविड था, मतलब बिल्कुल ही वो मई 2020 का मंथ था, वेयर एंटायर वर्ल्ड वॉज क्लोज्ड, टोटली। एंड उस वक्त मतलब 60,000 भी मुझे बड़ा लग रहा था कि आएगा कैसे, बिकॉज there were no transactions happening, people were not receiving money, they were not giving money, and it was like that. So that time I had filled for 60,000, जिसमें से फटाफट वो आ गया था। 23 days के अंदर अंदर वो पैसा आ गया था। जून में कोई मेरे लाइक कोई पैसा ऐसा था, दीपक मतलब मेरे हस्बैंड का कोई पैसे था जिसमें सिर्फ 40,000 रुपीज ही थे वो, मतलब इट वाज नॉट दैट। तो वो उन्होंने उस पर्सन के पास पता नहीं कहाँ से मेरा अकाउंट डिटेल्स थे,
तो वो आ गया था. देन आई टोल्ड दीपक दैट आई विल गिव दिस बैक टू यू, यू नो, बिकॉज वो ही सेज दैट हाँ कोई 40 आए होंगे. इट वाज अ वेरी स्मॉल अमाउंट, तो उस वक्त 40. सो ही सेड नहीं, अब तेरे अकाउंट में आ गए तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट बैक, सो यू कीप इट, इट्स ओके, यू डोंट हैव टू, यू नो. और उसके बाद माय मम इन लॉ गिव मी 20,000, क्योंकि मेरा बर्थडे था जुलाई में और बार बार हम लोग मिल नहीं रहे थे. मेरी मदर इन लॉ दूसरे घर में रहती हैं, दिल्ली में ही रहती हैं, बट दूसरे घर में रहती हैं. तो बाय चांस जून में यू नो माय हस्बैंड वेंट टू मीट हर, बिकॉज बहुत टाइम हो गया था ना, 3 महीने मिले ही नहीं थे. माय हस्बैंड वेंट टू मीट हर, तो वहां उन्होंने उनको 20,000 रुपीज दिए और कहा कि दीप्ति का बर्थडे आने वाला है और हम 1 महीना तो मिलेंगे नहीं, तो ये उनको दे देना. तो ये 40 + 20 करके 60 आ गया था. जब 60 आ गया फिर मैंने 1 लाख का भरा, ताकि रेजिस्टेंस नहीं आए, है ना. फिर 1 लाख का भरा, उसके बाद मैंने 2 लाख का भरा. तो ये लगातार आते गए आते गए आते गए इस तरह से. सो इफ इट इज बिलीवेबल टू यू, गो अहेड एंड फिल इट. मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट, लाइक अगर मैं 50 लाख अभी भर दूं तो मेरे लिए, मुझे रेजिस्टेंस आएगा कि 50 लाख कहाँ से एकदम से आ जाएगा. रेजिस्टेंस आता है, इसलिए I try and keep my amount. Maybe there will be some day when I can fill in 50 lakh rupees in one go also, but it works differently for. So if you don't have that resistance of filling such a big amount, then you can, of course, yeah. Because my one check of 50 lakh got manifested. मैंने शेयर भी किया था, तो उसके बाद से मुझे लगता नहीं कि मैं नीचे जाऊं. और हाँ हाँ, वो कैसे करो हुआ था, करो, आई डोंट. जैसे ठीक ऑनेस्टली लगता मेरे को रेजिस्टेंस किसी चीज में ही नहीं आता, तो दैट्स माय है. बेसिक हाँ नेचर. हाँ सो इसलिए मुझे वो, बट हाँ मुझे वो क्लियर हो गया कि एक चीज के लिए मैं कर सकती हूँ, और बाकी वो जो एक वो प्रैक्टिस भी होती है ना जो हम करते हैं, द जिसमें हम वो बिल्स लाइक थैंक यू पेड एंड देन वी हाँ, मेक वही, सम दैट्स प्रोसेस मनी में मैग्नेट चैप्टर मनी नंबर मैग्नेट 9. या. तो ये सारा क्रिएशन हम उसमें ये सब मिला के वो मनी मैं क्रिएट कर सकते. ओके ओके, आई एम हाँ गोइंग टू शेयर वेरी सून विद यू हाँ, ऑफ गाइस. कोर्स मैं यू हैव टू. हाँ चॉइस का है तुम्हारे पास. हाँ. थैंक यू सो मच.